So today we will discuss a new course. We will start today new course that is BSc non-medical मैथ की मेजर 6 सेमेस्टर की बुक ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम पूरी बुक को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग्स टू सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अलावा इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं। एक्स्ट्रा है इसमें जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंडर में जितना कोर्स है उससे थोड़ा सा ज्यादा चीजें भी हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। जो कोर्स की चीजें हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो इसके अंदर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे स्टेपिंग स्टोन मेथड है, वो इसमें नहीं है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे कई अदर मेथड हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी। ये मेजर मैथमेटिक्स वालों की ये बुक है 6 सेमेस्टर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की। देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट टुडे। So we will discuss about the syllabus of the university. So syllabus of the university is the course code. First of all, we know that the syllabus is the book for major mathematics, or this is the 4 credit, and course code of this book is Math 605th. Name of the book is Transportation and Game Theory. BA BSc semester 6, maximum time 3 hours, max marks 70 marks का ये पेपर का number of hours required for this course is 48 hours. तो सिलेबस हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर किस तरह से सेट होता है। तो the paper will be consist of 2 sections A and B of 70 marks. Section A will be compulsory and will contain 8 questions of 16 marks each of 2 marks, of short answer type having 2 questions from each unit of the syllabus. And section B of the question paper shall have 4 units 1, 2, 3 and 4. 2 questions will be set from each unit of the syllabus, and the candidate are required to attempt 1 question from each of these units. Each question in unit 1, 2, 3 and 4 shall be 13.5 marks. So candidates के लिए instruction है, candidate are required to attempt 5 questions in all. Section A is compulsory, and from section B they required to attempt 1 question from each of the unit 1, 2, 3 and 4 of the question paper. तो यूनिट 1 में हमारे पास सिलेबस में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, and other one is least cost method. These 2 methods are in this first unit. Then in the second unit we have Bogle's approximation method for determination of basic solution algorithm for solving transportation problem. Unit 3 में assignment problems mathematical formation Hungarian method for solving assignment problem है. Unit 4 में game theory है, that is formulation of 2-person sum games, solving 2-person zero sum games, games with mixed strategies, graphical solution and procedure. ठीक है, this is the syllabus of Himachal Pradesh University Shimla, course code mathematics 605th. Then the chapter names, there is 3 chapters in this book: transportation problem, mathematical formulation method, algorithm for solving transportation problem, assignment problem, mathematical formulation and Hungarian method. And in the 3rd chapter, game theory, 2-person zero sum games and formulating and solving 2-person zero game problem. These are the 3 chapters. So we shall
introduce our chapter topics. This is the transportation problem. Mathematical formulation method algorithm solving transportation problem. So सबसे पहले है introduction, then mathematical formulation of the problem, then transportation tabula algorithm for solving north best corner method, least cost entry method. These two method are in the unit 1. यहाँ से यहाँ तक हमारा unit 1 में होगा first chapter में. Then Vogel's approximation in the is in the second unit. This is in the first unit. This is in the second unit. Testing of optimality. This is also in the first second unit. Stepping stone method and module distribution method. These two methods are also in second unit, but these are not in the syllabus of Himachal Pradesh University Shimla. But we can study these methods. Then degeneracy in the problem, urban length transportation problem, multiple optimum solution, maximization transportation problem. सबसे पहले हम introduction पढ़ते हैं. The transportation model were originated in 1941. आपको ये भी पता होना चाहिए इस बुक में theoretical question theory बहुत पूछी जाती है कि what are transportation problem, what are unbalanced assignment problem, what are unbalanced transportation problem, what is Vogel's approximation method, and transportation की who were invented the model of transportation. So the theory is very important in this book. The transportation model were originated in 1941 when F.L. Hitchcock presented a study entitled The Distribution of Product from Several Sources to Numerous Localities, and this presentation is thought to be the first important contribution to the solution of transportation problem. Further, in 1947, T.C. Cookman presented an independent study called Optimum Utilization of the Transportation System. These two contributions assisted in the development of transportation model. Transportation problem is particular class of LPP. It deals with the situation in which a product is shipped from sources to destination. The objective is to minimize the cost of transportation while meeting the requirement at the destination. In a nutshell, transportation problem is used to optimize the distribution cost. It would be easy to explain the transportation problem by the following case. Suppose a company has 3 warehouses, W1, W2, and W3. Having limited supplier capacity from these warehouses, the product is transported to 4 stores, that is S1, S2, S3, and S4. With specific or limited डिमांड. और हिंदी में अभी आपको समझाता हूँ इस एग्जाम्पल के बाद. Each warehouse can transport each store, but the cost of transportation vary for all the combination. The problem is to find out the quality that each warehouse should transport to each stores in order to minimize the total transportation. अभी इसको पहले समझने से पहले हम क्या, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एक दुकान है और मुझे मेरी दुकान के लिए ऑर्डर देना है सामान का, और मेरे पास मल्टीपल स्टोर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है उनके रेट्स हैं. तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को कम से कम खर्च में, वो कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में मुझे वो सामान चाहिए. ठीक है, तो मैं इस तरह का वे अपनाऊंगा कि मैं सभी स्टोर से लूंगा अलग अलग सामान. जो सस्ता होगा उस एक स्टोर से लूंगा, जो दूसरे स्टोर में सस्ता होगा सामान वो दूसरे स्टोर से लूंगा. तो इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस पर बेस्ड होती है. तो यहाँ पे सप्लाई है, these are the warehouses और these are the store, that is destination, this is the demand. तो W1 को हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं. W2 को वैसे यहाँ सभी जगह से ले सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको समझा दिया.
वही है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज वन ऑफ द सब क्लासेस ऑफ एलपीपीज इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस क्वांटिटी ऑफ सिंगल होमोजेनियस कमोडिटी दैट आर इनिशियली स्टोर्ड एट वेरियस ओरिजिन to the different destination in such a way that the total transportation cost is minimum. To achieve this objective, we must know the amount and location of available supplies and the quantities demand. In addition, we must know the cost that result from transporting one unit of commodity from various origin to various destinations. अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, a transportation problem can be started mathematically as a linear programming problem as below, that is z summation of I1 to m summation j1 to n xij cij subject to constraint I j1 to n xij ai is 1 to so on up to m, and I1 to m xij equal to vj, bj is equal to 1 to so on up to n, xij j is greater than equal to 0 for all I and j. So यहाँ पे हम ai is the quantity of commodity available at the origin, vj is the quantity of commodity needed at destination, cij is the cost of transporting one unit of commodity from origin to destination, xij is the quantity transported from origin I to destination. The above transportation problem can also be portrayed in the tabular form, जिसे ट्रांसपोर्टेशन टेबुला इसको हम बोल सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं, ए टेबल इज यूज्ड टू शो ए डिस्प्ले और abstract all transportation data to assist and keep track of all algorithm calculation by storing information on demand, supply, cost, unit, transported origins and all destination is called transportation table, and is important that problem can be shown in the form of table so that the constraint and the objective function of the model can be studied or read right from the table. To make easy presentation and solution the problem with m warehouses and n storage, that is destination, is presented in a tabular form by means of transportation table as follows. जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन टेबल और समझ में आएगा, थोड़ा सा और समझ सकते हैं। ये डेस्टिनेशन है हमारी D1, D2, D अप टू DN तक, और दीज आर द ओरिजिन अप टू DM तक। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेस हैं, ये प्राइजेस हैं हमारे, ये तो हमारी डिमांड हुई है ऊपर, ये प्राइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, ये जो ऊपर हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसेस हैं, और ये शिप हुई है जो हमारी क्वांटिटी शिप हुई है वो है, ये डिमांड है। ये नीचे जो बीजे है ये डिमांड है हमारी, और ये जो सप्लाई है मतलब वेयर हाउस में कितने हमारे पास यूनिट्स हैं अलग अलग में वो है। ठीक है, यू कैन नाउ रीड दिस, यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि इंडेक्स फॉर स्टोर वेयर हाउस, इंडेक्स फॉर स्टोर्स, नंबर ऑफ यूनिट शिप्स, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट शिपिंग फ्रॉम वेयर हाउस, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन बेटा वो होता है non-negative value which satisfy the row and column some condition, also called rim requirement, is called a feasible solution. आप आगे हम आपको समझाएंगे कि feasible solution कैसे निकालते हैं जब हम फर्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज वो हमारा है फर्स्ट मेथड क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, then basic feasible solution, if the total number of positive allocation is actually equal to m plus n minus 1, that is 1 less than the sum of number of rows and columns, that solution is called basic feasible solution. Optimal solution beta, optimal, a feasible solution
is said to be optimal if it minimize the total transportation problem. मतलब वो टोटल कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है, उस सोल्यूशन को हम ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं. Balanced transportation problem, a transportation problem in which the total supply available equals the total demand is called a balanced transportation problem. बेटा अनबैलेंस्ड भी होती है. अनबैलेंस्ड में क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो डिमांड के बराबर नहीं होती है, उसको हम अनबैलेंस्ड बोलते हैं. और बैलेंस किसको बोलते हैं, जिसमें डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड या डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई के बराबर होती है. तो ये unbalanced a transportation problem where the total availability at the origin is different from the total requirement at the destination. Origin क्या होता है, the multiple sites for the facilities location which are analyzed by the transportation method. Destination a location with a demand for a material in the transportation method. Degenerate basic feasible solution. A basic feasible solution that contains less than m plus n minus non-negative allocations. Non-degenerate basic feasible solution. So non-degenerate, if the total number of positive allocation is exactly equal to m plus n minus 1, that is, these allocation are in independent position, that is BSF. Basic feasible solution is called non-degenerate basic feasible solution. A set of all allocations are called to be an independent positions if it is impossible to form a closed loop path through occupied cells. Path is tracked via during horizontal and vertical linear segments. Starting and treatmenting the occupied cells, we give a few examples of allocation in independent positions. This solution is non-independent position. This solution is non-degenerate basic feasible solution. Allocation is independent position, and it is possible to draw a closed loop path using some of the occupied cells. ठीक है. Then this is the last topic for today, algorithm for solving transportation problem. So a method for determining where to locate multiple facilities in order to minimize the total cost of transportation is called transportation method. We begin with an initial basic feasible solution and then obtain an optimal solution by making improvements to IBFS, that is initial basic feasible solution, until no further decrease in transportation cost is possible. So in the solution of transportation problem, first step is followed. Step 1, determination of the initial feasible solution. Following are the most commonly used method for finding the initial feasible solution of given transportation. First method is northwest corner method. Second is least cost entry method. Third one is Vogel's approximation method. In the next lecture, we shall study the first method, method 1, that is northwest corner method. Thank you.